बोला मास मूवमेंट। मास मूवमेंट जो भी इट इज, एन सपोज आई सेड दैट इट इज एन अ माउंटेन, व्हाट इट इज, माउंटेन्स और मे बी प्लेट्यू। आई सेड दैट जितना ऊपर कोई चीज जाएगा देयर विल बी एन ग्रेविटी, देयर विल बी व्हाट, gravity will be there. And if I said that, and I said that when the earth, I said that ऊपर में रॉक क्या कर सकता है, वेदरिंग की वजह से वेदर्ड हो गया, यस, और ये वेदर्ड रॉक ऐसे ही पड़ा हुआ, सपोज करो, अंडरस्टूड, और ये नीचे गिरना है, इसे क्या करना है, दिस इज एन अ माउंटेन एंड देयर इज एन वन रॉक इज ओवर देयर, वन रॉक इज लाइक दिस, लेकिन इस रॉक में क्या है, ज्वाइंट्स हैं, व्हाट इज इट, और इस ज्वाइंट्स, ये दिस ज्वाइंट बिकम वीक, जब रेनफॉल होगा तो पानी इस ज्वाइंट्स में आ जाएगा, यस और नॉट, एंड व्हेन द वाटर विल कम देन इट विल हेल्प इन व्हाट इज एन डाउनवर्ड मूवमेंट, सो वाटर विल एक्ट एज एन लुब्रिकेंट, वाटर विल एक्ट एज एन, so it will start moving down, understood it, getting my point? और यहां पर कोई रॉक टूट गया and that is in a physical and chemical weathering, तो वो भी अपने आप क्या करने लगेगा, over the under the pull of gravity it starts falling down, yes, पानी के साथ मूव कर सकता है, और यहां से सपोज एक रॉक टूटा तो हवा में भी गिर सकता है, through the air it can fall, through the water it can fall, yes. कभी अभी आपने देखा था, इफ यू हैव सीन, लाइक आई सेड दैट इन द माउंटेनस रीजन, जो अभी इन द उत्तराखंड में जो हुआ था, रेनफॉल वाज हैपनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेशन, अच्छा, सैचुरेशन एक ही पॉइंट से याद रहता है, ये यदि दिस बॉटल इज फिल्ड अप विद वाटर, दिस इज सैचुरेटेड और नॉट, मैंने क्या बोला, इफ दिस बॉटल इज फिल्ड अप विद वाटर इट इज सैचुरेटेड और नॉट, सैचुरेट, हाँ फुल्ली, देन मैं क्या बोल रहा हूँ, फिल्ड अप, फिल्ड विद अप, अब तक पूरा फिल हो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन। यदि मेरी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की है, 4 रोटी खाने के बाद व्हाट इट इज ना, फिर सैचुरेटेड, यस, एंड सिमिलरली एवरी रॉक सरफेस हैज एन व्हाट, सैचुरेशन कंडीशन, सॉइल, रेनफॉल हुआ और यहां पे वाटर क्या हो गया, रेनफॉल के थ्रू द वाटर इज मेक द सॉइल टू बी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और जब सॉइल सैचुरेट होगा थोड़ा सा लुब्रिकेंसी, देन दिस सॉइल विल स्टार्ट व्हाट, फ्लोइंग डाउन, एंड दैट इज नोन एज इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड, जिसको आप लोग बोलते हैं, दैट आई सेड दैट मड फ्लो, डेब्रिस फ्लो, अर्थ फ्लो, डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स आर देयर। तो किसके किसके मूवमेंट से कर रहा है, वाटर मूवमेंट, water is responsible as a medium for the downward movement, and which particles are coming, weathered particle, which particles, weathered particle, और ये एक ऐसा रॉक है और ये ऐसे लिखा हुआ है, this is a one rock is over there, okay, टूटा हुआ, but earthquake come then it has fallen down, so it is through the air it is falling down, yes or not, and then volcanic eruption is there, the volcanic eruption also causes, and then it can fall down through the air medium. Suppose the earthquake हुआ and यहाँ पे glacier है, glacier rocks has been broken and there will be avalanche, so that can be through the ice as a medium, yes or not, so ice can be also medium, one soil creep is one of the example you will understand, so which are the medium through which the particles are coming down, air, water and ice, लेकिन why they are coming under the pull of gravity, under the, why do they are coming under the pull of gravity, so simply I said that, or which rock is coming down, जो rock टूटा हुआ है, the rock which is attached over here completely, हिमालय ऐसे वैसे हो जाए, it will not come down, the rock which has broken in situ, if you remember weathering I said that it is a disintegration and decomposition of rock into particles of rock by physical, chemical and biological factor in its situ, so they will start coming, so which particles will come, weathered particle, and it is coming, why it is coming downward, under the pull of gravity, or yes tell me, through the medium of
air, water and ice. So what will be the definition of landslide? It is a downward movement of weathered particles of rock under the pull of gravity. It is a downward movement of weathered particles of rock under the pull of gravity through the medium of air, water and ice. Understood it? Understood? क्लास 9th एंड 10th में भी कभी पढ़ा होगा इलास्टिसिटी एंड ऑल. कभी आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रेशर दे रहे हो, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट ऐसा है. अंडरस्टूड? इस ऑब्जेक्ट को प्रेशर दे रहे हो, दिस ऑब्जेक्ट इज गेटिंग प्रेशर, दिस ऑब्जेक्ट इज गेटिंग प्रेशर. तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा? थोड़ी देर में ऊपर से टेढ़ा हो जाएगा. सॉलिड को मैं यदि दिस इज एन ऑब्जेक्ट, इसको मैं इफ आई प्रेशराइज, थोड़ी देर में ये टूटकर थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा. यस होगा. एंड दैट इज नोन एज व्हाट? थ्रू सम एंगल एंड सम लेंथ हैज बीन व्हाट इज एन डिफॉर्म्ड, एंड दैट इज नोन एज अ शियर फोर्स. इसको क्या बोलते हैं? विच फोर्स वी से? यदि किसी सब्सटेंस को थोड़ा सा प्रेशर करके आपने, जैसे ये सपोज करो ये सब्सटेंस है, ये एकदम ऐसे प्रेशर दिया तो इट हैज बीन व्हाट? सम लेंथ एंड सम, लेकिन ये तो एक दरवाजे की तरह, इट्स लाइक इन अ डोर. बट सॉलिड सब्सटेंस को यदि मैं फोर्स दे रहा हूं और नीचे से दबा हुआ है, देन ओवर द पीरियड इट विल गेट चेंज बाय सम एंगल, एंड दैट इज नोन एज अ शियर फोर्स. यस और नॉट? तो ये मुझे बताओ, ऑन द माउंटेनस स्लोप सम रॉक पार्टिकल्स आर देयर, दे मस्ट बी फीलिंग ग्रेविटी के कारण से. ये रॉक तो चिपका हुआ है, दिस इज इन द व्हाट? इंटरलॉक पोजीशन. बट दिस रॉक विल ट्राई टू मूव डाउन अंडर विच? शियर फोर्स. ग्रेविटी इसको क्या बोल रहा है? भाई थोड़ा सा टेढ़ा हो जाओ. विच वन इज कॉजिंग? शियर फोर्स. विच वन इज कॉजिंग? विच वन इज कॉजिंग? शियर फोर्स इज कॉजिंग टू टर्न लाइक दिस. लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं जा रहा है. व्हाई? ध्यान से देखेंगे. दिस रॉक हैज दिस काइंड ऑफ रफ सरफेस एंड दिस रॉक हैज ये पार्ट ऑफ दिस माउंटेन. सो ये क्या है? स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है. इट इज नॉट गोइंग. व्हाई? दिस शियर स्ट्रेंथ is greater than shear force, therefore it is not moving down. लेकिन when it will move down, जैसे ही थोड़ा earthquake होगा तो इंटरलॉकिंग टूट जाएगा. then the shear force will become greater than shear. So when do the landslide or mass movement will take place? When the shear force is greater than. समझ में आ गया? इसमें पानी आ जाएगा तो what will happen? It will become lubricancy, then the shear strength become decreased. Yes, tell me fast. Shear force is greater than. तो in other words we can, इसी definition को मैं बोलूंगा, in other words, when the shear force of weathered particles of rock become greater than shear strength. Yes or not? Which particles of rock? Weathered particles of rock. So लिख लें definition of mass movement. Actually this is mass movement or mass wasting. Understood? So which topic we are doing? Mass movement of, and in the Indian language we are doing landslide. In Indian, and it is what? Landslide. तो पहला definition कैसे दिखेंगे? It is a, write down. It is a downward movement of weathered particles of rock. It is a downward movement of weathered particles of rock under the pull of gravity through the medium of air, water and ice, through the medium of air, water and ice, through the medium of air, water and ice. Understood? Or in other words,
or in other words, when the shear force of weathered particles of rock become more than shear strength, become more than shear strength. Now, let's see which are the factors causing mass movement. Clear? So, write down the factors affecting mass movement. First I said natural cause, and second it is an anthropogenic cause. First factor I said that. अब मुझे इसमें से बताना कौन कौन से नेचुरल कॉज है. विच आर द नेचुरल कॉज? यस, अर्थक्वेक हमारे हम करते हैं या नेचर? नेचर. कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, ब्लास्टिंग इन द डैम फॉर्मेशन, एंथ्रोपोजेनिक. फ्लडिंग, it is generally natural, but at the present anthropogenic factor causing enhancing it. Anthropogenic क्यों enhance कर रहा है? Flood is a natural cause, but anthropogenic factor is enhancing it. Volcanic eruption, natural. Lithology, lithology का मतलब होता है hardness of the rock. Lithology means igneous rock, metamorphic rocks, and then other rocks. Sedimentary. So which rock will be? I said that easily, जो सबसे soft होगा वो जल्दी टूट कर नीचे आएगा. Yes or not? So lithology, it is a natural. Yes, सबसे hard rock क्या होता है? Igneous, जो basalt और granitic magma होते हैं वो उसको बोलते हैं igneous rock. Understood it? Geological structure. Geological structure means cracks, joints, fissures. कहीं पे भी क्रैक हो जाए तो दैट इज नोन एज विच वन? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. दैट इज नोन एज, एंड वन इट इज एन ह्यूमन इंटरफेरेंस. अनदर आई सेड दैट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? डिफॉरेस्टेशन. इट इज एन ह्यूमन इंटरफेरेंस. द मेजर वन आई सेड दैट, गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज नेटवर्क्स इन द माउंटेनस रीजन. इट इज एन ह्यूमन इंटरफेरेंस. और एक ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है, वी आर मेकिंग डैम्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स इन द माउंटेन सिस्टम. अंडरस्टूड इट? सो विच आर द नेचुरल कॉज? आई सेड दैट अर्थक्वेक, फ्लडिंग. लेकिन इसमें लास्ट में लिखेंगे एट प्रेजेंट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर इट इज लीडिंग टू वोल्केनिक इरप्शन, लिथोलॉजी, geological structure. Understood it? Clear? And then another we'll see the anthropogenic cause में हम लोग कौन सा देखेंगे? Human interference. And second one I said that which some projects which are running, blasting and all. जब भी हम blast करेंगे, that is a project is must be there. Constructional work. So these are the two major under the what? इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. अभी स्टार्ट कर दें तो आज ही कंप्लीट करा दूंगा. Thereafter I said, now have you seen that? Have you seen flour? When do we used to make chapati and roti? आप लोगों ने देखा होगा. समटाइम्स इन द फ्लोर पाउडर, आ फ्लोर पाउडर में, आटा के पाउडर में, व्हेन यू आर थ्रोइंग सम स्प्रिंकल ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंस? जब स्प्रिंकल ऑफ वाटर देखते हो तो वहां पर क्या होता है? और सेम थिंग व्हेन देयर इज अ स्मॉल रेनफॉल, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेन टेक्स प्लेस, दो सॉइल पे आप क्या देखते हो? स्मॉल स्प्रिंकल ऑफ वाटर ऑन टू द फ्लोर पाउडर, क्या देखते हो? छोटे छोटे सर्कुलर स्फेरिकल
formation. Why? The water wants to take in a smallest surface area, surface tension. Yes or not? Surface tension. पानी थोड़ा हो, then it will hold the rock. ध्यान से. The small amount of water will increase the shear strength. Yes or not? Hold it. Yes, because of the small amount of water hold the surface tension. But आप उसमें पानी ज्यादा डाल दो आटे में, देखो फ्लोर में, what will happen? They started flowing. Yes or not? So saturated water decreases surface tension. Surface tension का मतलब क्या होता है? Surface पे हमारे बॉडी पे sometimes आपको देखते हैं in your body get what I said that some wound and some heart and then blood, and after certain period आप देखते हो कि tension started. Why started taking tension? Surface started taking tension to take in a less area. इसी तरह water wants to take the less area. And जब water, suppose two rocks के बीच में water, very less water, they will try to the less area, and because of this they will what? Hold this two rock very hard. Yes or not? So the less water helps in the what? Helps in increasing shear strength. And more water decrease in the shear strength. Yes or not? Less water increase the shear strength. Increase the shear strength, and more water decrease, and then it will help in the landslide or mass movement. समझ में आ गया? So one point लिखेंगे, role of water in landslide. Less water through surface tension increases shear strength. Less water through surface tension increases shear strength. Yes, but more water around saturation, but more water around saturation exceeds shear force and decreases, exceeds shear force and decreases shear strength, and decreases, and it is causing mass movement, and it is causing yes, समझ में आ गया? So in the soil, if the less water is there, then it will be very good for us. Yes or not? Next one, we are going to see what are the different types of, हम लोग ये जो causes हैं, factors causing, उस पे बाद पे आएंगे. But which are the factors? What are the types of ये role of water है आपका? These are the types. First, we are going to see fall. Types of mass movement. Types of तो कोई भी चीज, if I am saying that I said that this is fall. Anything is moving freely under the gravity, that is known as fall. It means which medium? Air. Which medium? Air. Understood it? Fall. So I write down falling freely under the pull of gravity. Falling freely, जो मैं बोलता चलूं वो लिखते चलेंगे. Falling freely under the pull of gravity through air as a medium. Through air as a medium. Understood? Next one, I said that slide.
So this is, and I said that one slope, एक slope है, and this is also known as उसका एक क्या बोलते हैं, layer after layer bedding plane, इसको क्या बोलते हैं, bedding plane. So along this bedding plane or slope, any weathered rock, remember, listen me carefully, any weathered rock is what? Moving down means in the form of rolling. If I am saying that it is in the form of, I said that rolling or sliding. I said that rolling or any rock, if I say it, any rock, if it is moving like, I said that it is in a sliding or rolling. Any weathered rock moving over, किसके ऊपर मूव कर रहा है? Any weathered rock moving over slope or bedding plane under the pull of gravity in the form of sliding or rolling. Understood? So what is the slide? Yes. Any weathered rock moving over other bedding plane rock or slopes, other bedding planes or rocks, other bedding plane slopes or rock in the form of slide or rolling, in the form of slide or rolling. Clear? Next one I said that flow. This one. किसकी बात कर रहे हैं हम? Flow. Flow, if I am talking about, flow is always in a saturated condition. इसका मतलब any rock, any weathered rock moving in saturated condition. First ध्यान से. Any weathered rock, पहले ध्यान से सुने, there are several. Any weathered rock, yes, moving downward under the pull of gravity in saturated condition, means water has been completely filled up. This is known as flow. This is known as flow. There are three types of flow. Saturated condition में पानी के साथ मूव कर रहा है. If I say, so any weathered rock, I said that moving under the pull of gravity in saturated condition. In saturated condition, and there are three. First I said that earth flow. First I said that large piece of rock soil. Understood? Rock in the form of soil. In saturated condition moving slowly. कभी आपने डिस्कवरी में देखा हो, there is a full of what is in a trees, and then trees are slowly and slowly coming down. And नीचे घर बनाया है, धीरे धीरे घर को भी डुबा दिया. I said that what is earth flow. So I said that a large piece of what is, I said that rock soil, rock in the form of soil, in saturated conditions moving very slowly, that is known as earth flow. Or next we are going to see debris flow and mud flow. And if I am talking about, ध्यान से, sand particle दिख रहा है आपको? Larger than sand, there is a pebbles, stones, cobbles, big, larger than sand, and smaller than sand, it is in a silt and clay. जब पानी में silt and clay नजर आए, when the water has silt and clay, that is known as mud flow. Means smaller than sand and silt. Sand, when the size of the particle moving in saturated condition is smaller than sand, that is known as mud flow. And I said that when in the saturated condition, weathered rock is moving downward and then size of the particle is more than sand, it is known as debris flow. If you have seen the Uttarakhand, आपने देखा था उत्तराखंड में mud is more,
वाई मड ज्यादा हो गया था? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट हट गया था पूरा. I'll tell you how. So जब भी पानी आ रहा है तो they are carrying all this particle and it is in a saturated, not saturated, super saturated. जितना पानी नहीं चाहिए उससे ज्यादा. So it is leading to the what is in us mud flow, and पीछे से इतने बड़े बड़े particles are also coming. That is known as what? Debris flow. So this condition has made more havoc in the Uttarakhand flash flood, which I said that mud flow. And यदि आपने देखा होगा कि it is in a river is moving. जब आप रिवर एक वाटर मूव करता है, दैट इज इन इट्स ओन कैपेसिटी, बट विद इन द वाटर देयर इज सेवरल थिंग्स आर देयर. इट्स व्हाट हैवोक कंडीशन क्रिएट्स. इट्स स्पीड इट इज ऑफ इरोडिंग समथिंग एंड ब्रेकिंग समथिंग इंक्रीजेस. अंडरस्टूड. एंड आपने देखा होगा कि द होल बद्रीनाथ हैज बीन कवर्ड विद द सिल्ट क्ले पार्टिकल्स एंड सारा पूरा इतना तक, एंड देन होल दिस काइंड ऑफ वन फ्लोर हैज बीन सबमर्ज्ड बाय द sediment only. And they have a mud, these were having mud, and this particle, it is another debris. So which are the two dangerous, and why it happened? If you what is it? I said that आप लोग को मैंने बताया the one class soil erosion. Perhaps remember, when the 10 liter of water is falling down, first it will fall down on what? Lips. And then मैंने बोला था कि 1 minute आप 1 glass of water, perhaps remember I have asked 1 glass of water how much time will take to drink? तो आपने बोला 15 सेकंड, 30 सेकंड, 20 सेकंड. लेकिन मैंने बोला सडनली इफ यू वांट टू ड्रिंक यू कांट बी एबल टू ड्रिंक सारा पानी. वो बिकॉज आवर माउथ हैज एन व्हाट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एंड इफ इट इज मोर देन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑल द वाटर विल स्पिल अवे. सिमिलरली if the 10 liter of water is falling first on the forest is there, first it will fall on the leaves, then it is, and I say that the branches, then the stems, then the trunk, then comes down. It takes time. The soil has also capacity. Slowly and slowly water is coming and then moving inside. And out of 10 liter, how much it has been absorbed? How much it has been absorbed? 9 liter, only 1 liter moved, and then dhire dhire, that is not leading to what is any kind of flow and all, mud flow. But when the soil is exposed to deforestation, all the water is falling down, and that making the soil to be super saturated, and then breaking the topsoil splash erosion, and there is a sit erosion, and there will be what? Taking away all in the form of mud flow and debris flow, and that is their situation in Uttarakhand. Trees nahi hai, and that is it is beyond the ecological capacity. यदि मैं आपका you can carry 10 kg and आपके ऊपर 15 kg रखूंगा तो क्या हो जाएगा? Tell me. गिर जाओगे ना? गिरोगे? Yes or not? आप अपनी कैपेसिटी से ऊपर लेके जाओगे. You can't carry that. And if you go into what is in Uttarakhand, what is happening? They have also the ecology of Uttarakhand carry only 100 human being every year, but the people are going 150. So extra 50 is causing at the cost of ecology. तो उसके लिए क्या हो रहा है? River side is going, the trees are removing. Several development, and then river side. I said that hotels, so that you can. This is the river is moving and photos, selfie. Yes. So it is beyond the ecological cost. Yes, यार बोलूंगा कि नहीं? It is beyond the ecological capacity of Uttarakhand. First thing. And next, it is in a human capacity. Yes, in the Uttarakhand, a people is living. Yes or not? And every day they are earning, suppose 100 rupees. In a month they are earning 3,000. And in a whole year they are, 36,000. लेकिन आपकी वजह से वहां पे other industries has utilized this reason. Yes or not? उस रीजन में उसकी वजह से आपकी इंक्रीमेंट, आप पर ईयर कितना कमा रहे थे? हाउ मच? 36,000. नाउ बिकॉज ऑफ द मोर टूरिज्म यू स्टार्टेड अर्निंग 55,000. हाउ मच? योर टूरिज्म से योर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम हैज बीन इंक्रीज्ड. बट एक साल में आपके यहां एक बंदा मर गया. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस. यस और नॉट? फ्लड कम्स एंड ऑल. तो फाइनली आपको 40,000 लॉस सपोज. So finally 55 minus 40, you are in the 50. So you are in the loss, or you are in the, I said that, profit. You are in the loss. Your land is becoming infertile. You are in the loss. So that is known as beyond your human capacity. So ये सारे landslide का understanding, it will help, disaster management. Understood? So which are the flow? I said that
अर्थ फ्लो, डेब्रिस फ्लो, मड फ्लो. एंड मैंने क्या बोला था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो? When the weathered particles of rock moving under the pool of gravity, downward moving under the pool of gravity in saturated condition. Write down. Flow समझ में आ गया? So when the weathered particles of rock moving downward under the pool of gravity, in saturated condition. There are three types of flow. Earth flow, first it is earth flow. Yes, earth flow. When the large piece of rock soil, moving very slowly, downward under the pool of gravity, in saturated condition. In which condition? Just tell me, in which condition? In, समझ में आ गया? Next it is, I say, debris flow. पता होगा, size is more than sand. Size of the particles should be more than sand. Debris flow के लिए. When the weathered particles of rock, moving downward under the pool of gravity in saturated and supersaturated condition, and the weathered particles of rock size more than sand. In the bracket 2013 flash flood. Uttarakhand flash flood. Mud flow. Same है, केवल क्या है? What is the change in the definition? Size of particle is less than sand. Same definition लिख लें आप. और इसमें क्या लिखना है? Size of the particle is less than sand. In debris flow में क्या था? Size of particles is more than sand. Means when the weather particles are up moving under the pool of gravity in saturated or supersaturated condition, and the size of the particle is less than sand, it is known as mud flow. दोनों में ज्यादा devastating और speed किसकी होगी? Debris की होगी. ध्यान में रखिएगा. Moving under the pool of gravity, अब particles mass होगा. Particle में mass है. Mass में ज्यादा gravity रहेगी. Understood it? So, which speed will be more, debris flow or mud flow? Debris flow. And who will cause more disaster? Debris flow.
अंडरस्टूड इट। और आपको बद्रीनाथ टेम्पल का दूसरा गेट जो था वहां पर तो एक इतना बड़ा सा रॉक आ गया था, इसकी वजह से कुछ लोग हवा पानी में करते जा रहे थे। सम ऑफ द पीपल हैज बीन सेड because one side this is a gate, another side it is a gate, and the water is coming, and then suddenly one big piece of rock, and then amount of water entrance has been reduced, and then people is able to what, save himself. And after they go and see the picture, and then you can realize what I am saying. The whole van, cars, all are submerged. This kind of layer of thickness of deposition when the flood has gone and all. तो सोचो कितना डिवास्टेशन था। एक्चुअल फिगर का तो पता नहीं, द गवर्नमेंट फिगर इज टॉकिंग अबाउट समवेयर 10,000 एंड ऑल। एक्चुअल फिगर मे बी व्हाट इज मोर देन दैट। एंड लोकल पीपल आई डोंट, लोग पैसा भी तो मांग लेते हैं, इतना पर पर्सन दिस मच। यस, इंदिरा गांधी सड़क योजना विल आल्सो स्टार्ट आफ्टर दैट। पैसा कहाँ चला गया होगा, सड़क नहीं बन रही होगी। यस, प्रधानमंत्री रोजगार योजना उसके बाद दैट इज एन स्टार्टिंग इन दैट रीजन। इंदिरा गांधी आवास योजना दैट विल बी स्टार्टिंग फॉर द व्हाट इज एन कंस्ट्रक्शन फॉर रिहैबिलिटेशन एंड ऑल। घर बनाने पड़ेगी ना लोगों के लिए, पता है ना। सो मेनी करप्शन इज आफ्टर दैट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स, दैट विल स्टडी इन द व्हाट, डिजास्टर मैनेजमेंट इन द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड ऑल। सो आई सेड दैट, मैंने क्या कहा, कहाँ थे, फ्लो, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन आई सेड दैट स्लम्प। दिस इज स्लम्प, और ध्यान से देखिए, दिस इज स्लम्प। और ये ध्यान, इफ यू सी दैट दिस इज वन ऑफ द रोड नेटवर्क हाईवे और समथिंग लाइक दिस, another road is also over there, very big. And you know that when I have said that river landform, when the river moves and with the high discharge and having more of what is in a mud flow and all, means वहाँ पे river load is also more, discharge of water is also more. So what happened, they started cutting the base of the river outer corner फटाफट, ये movement भी रुक जाएगा, they will do more of this. So when they started what it is breaking this portion, then what will happen, एक portion से ये क्या होने लग जाएगा, this thing started what, आपने देखा होगा ऐसे स्लिप करते हैं, कभी आप कहीं से कुछ करो तो they will start flooding like this, and I am talking about slump. What I am talking about? So when the base of the river under high discharge, when the base of the river bank started breaking, listen me carefully, when the base of the river bank started breaking under the high discharge of water, then what happened, upper portion in the curve shape, upper portion in the curve shape started sliding, and then they will finally what, submerge within, ये टूट कर इसमें आ जाएगा, it will be carried away. देखा होगा आपने, sometimes you must have felt कि ऊपर से in the form of what I said, that curved surface, understood? This is what I said, that slum. हुआ है उत्तराखंड में ऐसा, at several places road construction has been devastated and people, what is in a movement and transportation from one region has been another stopped, and the several cars लोग वो लोग अंदर चला गया, understood? This is known as what, slum. And in which condition, फ्लैश फ्लड इन उत्तराखंड। और आपको एक फैक्टर क्या मैंने बोला था, फ्लड, याद है ना आप लोगों को। एंड ये जो फ्लड मैंने किसकी वजह से बोला है, दिस इज 2000, इट इज एन नेचुरल बट एट द सेम टाइम ह्यूमन हैज व्हाट इज एन एंथ्रोपोजेनिक रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, दे हैव एनहांस्ड इट। सो राइट डाउन स्लम, व्हेन द रिवर विद हाई डिस्चार्ज, when river with high discharge cutting the bank of river, cutting the bank of river, then upper mass under the pull of gravity, upper mass under the pull of gravity along the curved shape
started rolling or sliding down. Started rolling or sliding down. तो यहां पर पानी is not the role, water is not playing the role, gravity and cutting its base. So it started what? Rolling or sliding down along the cut surface. This is known as what? Slump. So हमने क्या देखा? Fall under the air pull of gravity. And then we have seen what is in a slide. Then I said that whether rock is what is in a sliding or moving over the other bedding slopes. Then we have seen what? Flow, and flow के लिए बोला it should be move under the gravity of under the pull of gravity downward in the which saturated condition. Earth flow, debris flow, slump. Another is in a creep. This is what I said that, or सबसे slowest movement is this creep. Next one I said that soil creep. I said that. Which one I said that? Soil creep. और ये कहां पे होता है? Where it happens? Where it happens? This happens in the higher mountainous region where the part of a year is frost. कहां पे होता है this soil creep? Part of a year is what? Frost. Frost means the temperature is below 0 degrees Celsius. And the rest of the year is what? Above freezing point. Means temperature is 10, 20, something like this. तो suppose करो, you know that, आप suppose करो कि ये soil है, this is soil. And soil के अंदर में क्या होता है? Tell me, there is no water. What is there? And then when the temperature become below 0 degrees Celsius, तो this water will convert into ice. और आइस जैसे ही होगा तो ये पोर्शन से आइस कैसे फैलेगा? दिस वे, along this ice they will expand like this. आइस पहले वाटर है, एंड जैसे ही आइस बना, आइस वॉल्यूम इज 9% more than the water. They will, during the freezing they will expand like this soil. And जैसे ही summer comes and temperature below become freezing point, temperature become more than the freezing point, then the ice will start melting. और कोई भी चीज सीधे अंडर ग्रेविटी गिरता है, तो यहां से उठने के लिए तो this has been what is uplifted like this, but when it will fall down they will fall like perpendicular under the gravity. Gravity ऐसे होता है ना, so they will fall like under the gravity. फिर again the next year again freezing, and then again melting, next year again freezing, then again melting, then again freezing, then again thawing, again freezing, again thawing. Thawing means melting. Freezing, thawing. Alternate freezing and thawing in the upper mountainous region help in the what? 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter movement of upper soil. Understood? And it is known as soil creep. It is known as what? Understood it? So write down, in the upper mountainous region where the part of a year temperature is below freezing point and rest is above, and rest is above का मतलब समझते हैं ना, above freezing point, above, then alternate freezing and thawing. Thawing means THAWING, melting. Alternate freezing and thawing. Yes, tell me. Alternate freezing and thawing, making the soil to move very slowly with a speed of 1 centimeter to 3 or 4 centimeter per year. Understood? Very slowly it will move. Yes or not? समझ में आ गया? The slowest, सबसे ज्यादा slowest कौन है? Soil creep. Understood it? Yes. लेकिन इसी में मैं बोल दूं कि water क्या है? Saturated. If the water is more than the capacity, so they will expand more.
Yes or not? Saturated condition में and water then they will expand more and more expand then there will be water. और जैसे ही वो पानी में convert होगा so they will make the things to be slide fast. Yes or not? Then ये नीचे गिरेगा और साथ में ऐसे बढ़ जाएगा आगे and next year ये particle यहाँ पे है then it will again expand and then it will come down लेकिन पानी के साथ summer में they will move downward also and this is known as solifluction. Solifluction. So soil creep in the form of saturated condition. Soil creep, solifluction means soil creep plus क्या होना चाहिए? Just tell me. Highly saturated. Understood? Then it will lead to solifluction. समझ में आ गया? So which are the types of mass movement and it is also known as mass wasting? Which are? और ये दिख रहा है, this is what? Creep along the curve, slump, and there is a slowly earth flow and there is a debris flow, mud flow, and then it is in a slide, that is in a rock slide and all, and this is I said that yes, fall. और आपको ही पता है avalanche means movement of glaciers and all. समझ में आ चुका है? These are the types of what? Mass movement. Seen like this. We have to see that what are the factors. First I said that it is, and I said flood and heavy rainfall. In the 2013 we have seen that there is a very heavy rainfall. First it is, I said that very heavy rainfall and cloud burst phenomena has led to the excessive rainfall in a day, and then river started moving above the bank of the river. Yes or not? Natural bank means if I am talking about every year the river has this kind of the bank full width. एक river का क्या होता है? The river has what? River has what? This is in a bank full width, and after that the river started moving, then it is causing flood. Yes or not? So I said that heavy rainfall and cloud burst phenomena in a day itself led to the what is large amount of discharge of water. That discharge of water started cutting the bank of the river, and that is causing a heavy slump. Then heavy slump started taking place. And then we have been able to say also due to deforestation and then exposed mountainous region in the Uttarakhand, led to the saturation due to heavy rainfall, and then led to due to the heavy saturation, then it converted into mud flow and debris flow, and that causes real disaster in Uttarakhand flash flood in 2013. In the similar way, we can be able to see, like I said, that in the 2015 Jammu and Kashmir flood that has resulted into different kind of what? Mass movement, landslide. So the flood is causing what? Landslide, and that is in the form of hazard. Hazard का मतलब क्या होता है? Hazard means any phenomena which has a potential to cause loss of life and property. Any phenomena. यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उसके पास पोटेंशियल है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, दैट इज एन हैजार्ड. लेकिन व्हेन द बॉम्ब ब्लास्ट टेक प्लेस एंड इट्स इंपैक्ट कम आउट, बिल्डिंग हैज बीन डिवास्टेटेड, 50 पीपल हैज बीन डाइड, दैट इज नॉन एज अ डिजास्टर. तो हैजार्ड किसको कहा जाता है? हैजार्ड इज एन अ काइंड, इट इज एन अ पोटेंशियल, लेकिन जब वो हो जाता है इट्स इंपैक्ट, इट इज एन डिजास्टर. तो देयरफॉर देयर इज नो हैजार्ड मैनेजमेंट. बम को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जब बम होगा तो डिजास्टर होगा. उसके लिए पीपल को मैं क्या कर सकता हूं? अवेयर, डू नॉट टच दिस, इफ समथिंग इज हैपनिंग मेक द पीपल टू कॉल. यस और नॉट? अर्थक्वेक आई कैन नॉट स्टॉप, but I have to make the building where we can stop the what is reduce the loss of life and property. That is, we have to manage the disaster. Loss of life and property loss ko we can reduce. Therefore there is no hazard management. Which management? Disaster. The hazard is a phenomena जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं. But when earthquake takes place, volcanic eruption takes place, flood comes, these are what? Hazard. But when causes loss of life, it becomes what? Disaster. So that causes loss of what? So what is a disaster, and that has to be managed at high level. Understood it? So flood we have seen, is it clear? And where that has been taken place?
in the what is in a mountainous region, and then further it has accentuated in the Gangetic Valley also. So write down. In 2013 flash flood, heavy rainfall cloudburst, heavy rainfall, cloudburst, and other geological and atmospheric activity caused sudden increase in discharge of water. Caused sudden increase in discharge of water. Due to this, exposed mountain slopes through saturation मतलब पानी से भर गया, through saturation converted into disastrous debris flow and mud flow. Ganga river water, along with debris and mud started eroding the bank of river, started causing erosion of bank of river and at several places slump type of mass movement occurred. Similarly, in 2015 Jammu and Kashmir, such phenomena occurred and caused high loss of lives and property. High loss of life को प्लूरल में क्या बोलते हैं? Lives and property. Loss of lives and property. Therefore, there is an effective implementation should be there at the level of National Disaster Management Authority, State Disaster Management Authority, District Disaster Management Authority, and public participation. There should be an effective what is an implementation, and who has to do? NDMA, SDMA, DDMA,
Yes? And which one I said that? Yes? Public participation. क्योंकि मैंने अभी एक देखा, one I have seen, my wife has shown one Facebook video. इसमें दिखाया गया था a person since 10-15 years what he is doing, that every day he is a scientist, every day he come out with his car and collecting lots of pebbles and all, and then wherever in the road there is some ditches are there, they are filling it, and he is doing it. So he said that one thing, it's my duty, everything cannot be done by the government. Yes or not? And another side, I am doing some kind of, instead of walking and I am doing some physical work, it's my exercise itself. And he's around 55 or something like this, 60. And lots of the whole sack filled up with what? So there is a need of public participation. We should not think whether there is an NDMA is there doing or not SDMA, but we have to what is ready for it. Ultimately, it is our loss. Understood? So this is about this one. The next point it is what? Earthquake. You know that this Himalayan zone comes under, I said that zone 4 and zone 5 along with the northeast. It comes under zone 4 and zone 5. Yes or no? And what is the meaning of zone 1? Just dhyan se sunenge. Zone 1 means when the earthquake comes, nobody feels earthquake. Zone 2 means somebody feels earthquake. Zone 3 means everybody feels earthquake. And zone 4 means everybody feels earthquake, loss of lives, property. And zone 5, everybody feels earthquake, but there is a massive loss of life and property. Zone 1 क्या है? Nobody feels earthquake. Zone 2, somebody. Zone 3, everybody feels earthquake. Zone 4, everybody feels earthquake, but there is a loss of life and property. And zone 5, everybody feels earthquake, but there is a massive loss of lives and property. So कौन से 3 zones are more effective? 3, 4, 5. यहीं पर लॉस होने के चांसेस हैं. तो वी हैव टू डू व्हाट इज द मैनेजमेंट इन दिस रीजन. लेकिन हमें देखना है किसके फॉर्म में? अर्थक्वेक के बारे में. एंड आवर इंडिया जोन 3, 4, 5 दोनों मिला के लगभग 59% है. 3, 4, 5 इंक्लूड्स हाउ मच? 59% इंडिया. अंडरस्टूड इट? किला जब अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा? यस तो रॉक का क्या हो जाएगा? व्हेन द अर्थक्वेक विल हैपन, देन ये रॉक क्या होगा? शियर फोर्स बढ़ जाएगा इसका, क्योंकि इसकी शियर स्ट्रेंथ, चिपकने की ताकत क्या हो जाएगी? देन वेदर पार्टिकल्स ऑफ रॉक व्हाट विल हैपन? देयर शियर फोर्स विल इंक्रीज एंड देन मोर देन शियर स्ट्रेंथ, देयरफॉर इट विल लीड टू द व्हिच? रॉक फॉल. Yes or not? Rock slide and other kind of landslide. Understood it? Clear? So write down. Most of the Himalayan zone of India, Himalayan mountainous zone of India, along with northeast, comes under zone 4 and zone 5 due to plate movement of continental convergence. Due to plate movement of continental convergence. During earthquake,
in this zone shear force of weathered particles of rock, shear force of weathered particles of rock become more than shear strength, become more than therefore following type of mass movement, therefore shear force is more than become shear strength. स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, इसको पकड़ के रखना. shear force आपने सुना होगा ना, किसी भी रॉक पे आप व्हाट यू डू, प्रेशर देते हो तो ऐसे होता है. इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से दें. इसको जब हम प्रेशर देते हैं तो ये क्या फील करता है, इस सॉलिड को इन प्रेशर देंगे तो इट विल बेंड लाइक दिस. और यहां पे कौन प्रेशर दे रहा है, ग्रेविटी. लेकिन इसके बीच में क्या दिख रहा है आपको, आपस में रॉक सरफेस आपस में इंटरलॉक्ड है. लेकिन ये रॉक टूटा हुआ है, बट इट इज इन इंटरलॉक, इट हैज अ शियर स्ट्रेंथ. लेकिन जैसे ही टूटा तो ये थोड़ा सा अर्थक्वेक की वजह से हिल जाएगा, एंड देन शियर फोर्स विल इंक्रीज एंड शियर स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, एंड देन देयर विल बी व्हाट, following types of what mass movement will occur, like rock fall, rock slide, landslide, etc. For example, Nepal earthquake 2015. For example, Nepal earthquake 2015. Understood? And in this one, what happened? You have seen, because of such kind of what is in a landslide, lots of what is in a rural area has been devastated. Okay, next, it is, I said, volcano. Which, and then where is the volcanic eruption in India? Andaman and Nicobar region. This region is what is a volcanic zone. इंडिया में और कोई volcanic zone नहीं है आज के डेट में. Deccan Plateau has been formed, but it has been moved away from the hotspot. So I said that this region is, I said that only presently what is an active one. और इसकी maximum height भी जाएंगे तो if I'll say that which is the active volcanic mountain island, Barren. कौन सा है, Barren. एंड देन मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ कुछ में, नर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, लड़के, द बॉयज, दे आर व्हाट इज ना वेरी एक्टिव, दे आर व्हाट इज ना एक्टिव होते हैं. लेकिन शादी के बाद वो एक्टिव नहीं होते, वो डॉर्मेंट हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं वो, उनकी वोल्केनिक इरप्शन जो होती है ना शादी से पहले ही तक रहती है, उसके बाद दे आफ्टर द मैरिज दे बिकम डॉर्मेंट. और वो व्हेन दे गेट इनटू बार में 2-4 लगाने के बाद दे बिकम एक्टिव. So bar means active. Barren Island is in a which kind of volcanic eruption? Active. Narcondam बगल में ही है, there is a dormant. So I said that, क्या मैंने बोला? Volcanic eruption. And when the volcanic eruption will come, explosive volcanic eruption. When the volcanic eruption will come with the explosion, then what will happen? It will put thunder and earthquake, and that earthquake will lead to what? Lead to what? Increasing shear force and decreasing shear strength, and that led to different kind of what? Rock slide, landslide, and rock fall. Understood? पानी है नहीं इसमें. This way it will come down. Understood? But the highest peak if you will see in the Andaman Nicobar, Saddle Peak, और उसकी हाइट 700 है, 722 पता नहीं ऐसे कुछ है. तो it is not very high. It is our Western Ghat, वो उससे ज़्यादा है, the whole Western Ghat. So it is in a very minimal, but even then it is in a higher. Anyone it will cause landslide. तो हमारा due to volcano, which region of India will have a mass movement? Andaman and Nicobar. So write down. Especially explosive volcanic eruption. Which explosive? Especially explosive volcanic eruption can create earthquake in volcanic mountain. Can create earthquake in volcanic mountain.
understood, can create earthquake in volcanic mountain, and this earthquake will reduce shear strength and comparatively under pull of gravity shear force will increase. Under pull of gravity shear force will increase. Understood? And that can cause following types of mass movement. Like rock fall, rock slide, लैंडस्लाइड एटसेट्रा. आपको दिखना चाहिए मैं क्या क्या वर्ड बोल रहा हूँ. हियर आई एम नॉट यूजिंग क्रीप, आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग, यस आर नॉट स्पेसिफिक वर्ड आई एम यूजिंग. इन विच सेक्शन व्हाट कैन हैपन. ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी कुछ भी घुसा दो. ओके, सो आई सेड दैट नेक्स्ट पॉइंट volcanic, and for example which region? Andaman and Nicobar region. In 2015 explosive volcanic eruption took place. 2015 बहुत बड़ा था, हुदहुद बहुत कुछ इंडिया में हुआ था. And 2015 what I said that explosive volcanic eruption. लेकिन वैसा नहीं है एक्सप्लोजन का मतलब आप सोचोगे कि दुनिया हिल जाएगी. दैट आइलैंड गेट व्हाट इज एन एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. 2013 में भी हुआ था. सो आई सेड दैट नेक्स्ट वन आई सेड कौन सा है? लिथोलॉजी. नेक्स्ट वन आई सेड lithology means I said that hardness of the rock. Lithology means, and if you see that Himalaya, I said that Himalaya is what it is now. हिमालय का केवल ग्रेटर हिमालय में थोड़ा सा ये क्या है हार्ड रॉक है, बट दिस सिवाल, मिडिल हिमालय, शिवालिक, ऑल आर मेड अप ऑफ sedimentary rocks. All are made up of, and that this soil are comparatively what is in a softer than the igneous and metamorphic rocks. Therefore, these rocks can be easily what is na eroded and converted into different kind of mass movement. Understood? So write down. In comparison to harder rocks, softer rocks in the mountainous region or plateau region are more prone to erosion. Therefore, eroded rock under the influence of high shear force move downward under the pull of gravity. Under the pull of gravity. Understood? भी हो सकता है, पानी वाला भी हो सकता है, without water, the different all kind of mass movement in the Himalaya can happen. Yes or not? Even rock fall can happen, even it is a softer rock है. Suppose करो एक rock क्या है? This rock is there, और ये rock soft है, ये erode हो गया, तो अचानक ये rock क्या होने लग जाएगा? Started falling down. Rock fall can happen. So anything can happen, and this rock is weak. So they have been easily eroded by wind. It can be easily eroded by the, I said that soil creep kind of it, and they can start falling under the gravity also, sliding down.
So there can be slide, there can be flow, there can be every kind of it can happen. Understood? So I said that last line. What I have said? Huh? And can cause almost all kind of mass movement. Yes. For example, Shivalik and Middle Himalayas is more prone to landslide than Greater Himalayas. Clear? Because Greater Himalaya is relatively stronger. Second example, अब मैं हिमालय और वेस्टर्न घाट बोल रहा हूं. Who is more prone to landslide? Mass movement? Because Western Ghat is, I said, that harder rock. Yes or not? And then Himalaya is very softer rock. So in comparison to the, if you compare, which one I said that? Himalaya and Western Ghat, then the Himalaya is more prone to what? Landslide than Western Ghat. दोनों steeper है. Yes or not? Both are steeper. So write down. Western Ghat and Himalayan mountain region both are steeper and prone to mass movement but rocks of Western Ghat is stronger than Himalayas. So on the basis of hardness or lithology, softer rock Himalaya in comparison to Western Ghat more prone to mass movement. Understood? Next one, it is geology. And what is the meaning of geology? Yes? Geology means cracks, joints, fissures, faults. And if you see, like I said that, एक idea लेंगे आप, in this region fault has occurred. Suppose I said that, listen me carefully. If the rock is like this, and you have seen normal fault, and ये portion under the tensional force, and this portion under the tensional force has gone down, then what will happen? This section come down, and this section will remain on the top. Clear? And this section has come down. आपको पता है normal fault में hanging valley is coming down. So that becomes Vindhya range, that becomes Satpura, and that is an Ajanta range. And between Vindhya and Satpura, Narmada Rift Valley. And between Satpura and Ajanta, which one I said that? Tapi Rift Valley. So there is a
There is why I said that in this region I can be able to have what? More fault, more fracture, more cracks, more joints. Yes or not? Yes or not? And जब हिमालय फॉर्मेशन में देखेंगे, जब हार्डर रॉक नीचे जाता है, सपोज करो यहाँ पे हिमालय में, तो जब एक हार्ड रॉक जब ऐसे बेंड हो रहा है तो देयर विल बी एन क्रैक्स विल डेवलप. यस और नॉट? सो देयर आर सेवरल क्रैक्स, joints, fissures, fractures, faults and rifts. In which zone? Central part of India. And they are, आप देख रहे हैं weathering, वहां पे erosion बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है. So that kind of landslide due to the crack, वो तो they have more in number, but हिमालय में यदि कहां कहां क्रैक होगा तो वो तो ज्यादा होगा. Yes or not? Yes or not? हिमालय जोन में, हिमालयस में आज मैं बताऊंगा कि फॉल्ट्स है. फॉल्ट का मतलब जानते ना, ऐसा है हिमालय में. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर इज एन व्हाट? ग्रेटर हिमालय, दिस इज इन मिडिल हिमालय एंड देयर इज एन व्हाट? शिवालिक. इसके बीच में क्या है? दिस इज एन मेन सेंट्रल थ्रस्ट which I said that between greater Himalaya and middle Himalaya, what is there? Main central thrust. It means a fault. Yes. And between middle Himalayas and Shivalik there is an, I said that main boundary fault. And उसके बाद यहाँ क्या था? इस रीजन में डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, इट बिकम व्हाट? इंडो गैंगेटिक प्लेन. और इसके बीच में ये फॉल्ट है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट. सो द हिमालय हैज, विच आर द फॉल्ट्स? MCT, NBF, and which one I said that? Yes, tell me. HFF, Himalayan front fault. फॉल्ट दोनों जगह में है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन रीजन मास मूवमेंट करेगा लैंडस्लाइड? जो ज्यादा स्टीप और ज्यादा हाइयर होगा. हाइयर माउंटेनस रीजन प्रोवाइड्स मोर ग्रेविटी एंड मोर स्टीपनेस, देन इट विल बी मोर मास मूवमेंट. अंडरस्टूड? सो राइट डाउन. Geology means fracture, cracks, joints, fracture, crack, joints, fissure, F-I-S-S-U-R-E, fissure, rift, faults, इन रीजनों में क्या हो गया? स्टिल में पानी आराम से चला जाएगा. इन दिस रीजन क्रैक्स में पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? एंड व्हेन द वाटर विल गो, दे विल डिसॉल्व इट एंड दे विल डू व्हाट? केमिकल वेदरिंग, याद है ना? यस. हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, हाइड्रोलिसिस, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन. तो इस रीजन के कई रॉक को हटा देगा और इसको बोलेगा पहले ऐसे चिपके थे, दे हैव बीन रिमूव्ड एंड दे स्टार्टेड फॉलिंग डाउन. सो दिस रीजन्स आर मोर प्रोन टू वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, which further accentuate means increase in what? Yes, movement of faults along this, and this fault lead to what? Different kind of what? Mass movement. Because if this, what will happen? यदि they will move, then what will happen? इस क्रैक्स में सपोज करो कि यहां पे क्रैक है, दिस माउंटेन हैज एन क्रैक, पानी चला गया, पानी चला जाने के बाद ये कमजोर हो गया, और कमजोर हो जाने से व्हाट विल हैपन? इफ इट विल बिकम वीक, देन इसका शियर फोर्स बढ़ जाएगा अंडर द ग्रेविटी गिरने के लिए, और ये जो चिपका था हुआ शियर स्ट्रेंथ, इट विल डिक्रीज, हट जाएगा. द शियर फोर्स इंक्रीज एंड देन शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज एंड दैट विल लीड टू, यस और नॉट? सो ये कहां पे हो रहा है? इट इज मोर हैपनिंग इन द हिमालयाज रादर देन द मोस्ट फ्रैक्चर रीजन. ज्यादा फ्रैक्चर रीजन कौन सा है? दिस. बट इज हैपनिंग इन विच रीजन? इट इज इन हार्डर रॉक, इट इज इन सॉफ्टर रॉक. अंडरस्टूड? सो राइट डाउन. These regions are easily chemically weathered and help in increasing shear force
under the pull of gravity help in increasing shear force under the pull of gravity. Yes, shear force under the pull of gravity. Understood it? Help in increasing shear force under the pull of gravity and decreasing shear strength. Understood? And इसके वजह से क्या होगा? Different kind of, that lead to different kind of mass movement. That lead to different kind of mass movement. Central India, Vindhya, in Central India, Vindhya, Satpura, Ajanta, has such kind of geological structure very high in comparison to Himalaya. In comparison to Himalayas. Clear? But in comparison to Himalaya ये कैसा है? More fractures and all. तो यहां पे ज्यादा होना चाहिए ना. अभी तो मैंने यही सिखाया कि there it should be more. Yes, but this topography in Central India having lower landform and stronger rock, having lower landform and stronger rock, lower landform and stronger rock, whereas Himalayas are lofty with softer rock. Himalayas are lofty which provide more gravity with softer rock. Himalayas are lofty which provide more gravity with softer rock. Along with fault like MCT, main central thrust, MBF and HFF. Change the para. HFF, Himalayan front fault. Faulty, these faults of Himalaya is comparatively less than central India, comparatively less than Central India, but gravity and softer rocks help in more weathering and erosion. Help in more weathering and erosion. Help in more weathering and erosion during different, कौन सी एक्टिविटी होंगे? अर्थक्वेक, सुनो पहले, अर्थक्वेक हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड atmospheric activity, during different geological activity and atmospheric activity, during different geological activity and atmospheric activity. तो आपने एक साइड किसको देखा? यहां पर lots of fracture and cracks, full of
but one side you have seen there is an MCT, MBF is there, comparatively less than this. लेकिन यहाँ पर कौन है? Who is there? Softer rock. And who is there? Higher height. And higher height provides what? More gravity to come down. Yes or no? So therefore, under the pull of gravity and softer rock, this region is more prone to weathering and erosion. And then they can convert into different kind of mass movement, जो कि हमारे इंडिया में नॉर्मल वे में क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड. लेकिन लैंडस्लाइड क्लियर. सो नेक्स्ट, दिस इज क्लियर, लिथोलॉजी एंड जियोलॉजी. Next point that we are going to see, human anthropological factor. Which factor? So हम लोगों ने अभी natural factor किया. Which are the natural factor? Tell me. Flood, rain. Flood मैंने बोला, flood and heavy rainfall. Second I said that earthquake. Third one I said that volcanic eruption. Fourth one I said that lithology. Fifth one I said that geology. अब बताइए, यदि आएगा तो आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, और बच्चे के पास जब क्वेश्चन आता है ना ये, तो वो अपने तरफ से कुछ पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट स्ट्राइकिंग रहता है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पॉइंट तो मार्क्स कैसे एग्जामिनर देगा? यू शुड हैव ना स्पेसिफिक पॉइंट. जब व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग करेंट अफेयर एवरीवेयर, आप स्पेसिफिक पॉइंट बनाए, वो आपके लिए लॉन्ग लाइफ स्ट्राइकिंग होगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा. लाइन याद रहेगा वो नहीं आएगा, स्पेसिफिक पॉइंट्स. And those specific points if you are making and what is taking with you for a long time, तो वो वहाँ पे points में convert होगा, and it will help in your essay also. So write down the next one. I said that human, what is I said that anthropological factor, and उसमें first factor मैंने क्या कहा? Yes. हाँ होता है, but it is in Himalaya से ज़्यादा, हिमालयन में ज़्यादा होता है. अभी तो मैं अभी ये खत्म करने के बाद आऊँगा वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, फिर हिमालय विद वेस्टर्न घाट. तो जब आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर होगा तब आप ये समझेंगे कि व्हाई इट इज हैपनिंग ओवर देयर. क्लियर? कहाँ थे हम? पहला क्या था? कंस्ट्रक्शन वर्क. इफ यू हैव सीन दैट, आपको इफ यू नो दैट गंगा हैज बीन सेड दैट in the Uttarakhand 100 kilometer completely eco-sensitive zone. An eco-sensitive zone not only for the eco का मतलब completely ecologically it is vulnerable. So there should not be any kind of what is a human interference. वहाँ होना ही नहीं है. But there is an, I said that जब 2013 flash flood आया था, that time environmentalists has said that कि several they are putting the word that do not do it, don't do that, don't do that. लेकिन उसके बाद भी करे जा रहे थे. And hundreds of projects are running. Then thereafter the Supreme Court has also said that what is going to stop this 24 projects. Okay? So the several projects and constructional work which are running in the mountains, they have been passed through what is in blasting. And during the blast what happened? Earthquake of the nearby rock, and therefore weathered rock को क्या हो जाता है? Their shear force increases. वो टूट जाता है. नीचे गिरने के लिए shear force under the pull of gravity increases and shear strength what? Decreases, and that led to what? Landslide. और ये आपने देखा भी होगा पिक्चरों में, कुछ किया तो ऊपर से रॉक इधर उधर, एंड कोई हीरो बचाते बचाते हीरो बन गया, मरा नहीं. So I said that, what I am said? Constructional work. In the Himalayan region, MPVP, multi-purpose valley projects, dams, and other constructional work other industrial work other development of transportation work need blasting. चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन वर्क बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, आपको क्या चाहिए? यू नीड ब्लास्टिंग. एंड ब्लास्टिंग लीड
increase shear force of weathered rock and causing rock fall. यहां पे क्या होगा? रॉक फॉल, रॉक स्लाइड. इसमें बड़े बड़े रॉक गिरेंगे, ऐसा नॉट लैंड स्लाइड नहीं बोलूंगा. रॉक फॉल, रॉक स्लाइड. व्हाट विल बी देयर? रॉक फॉल एंड रॉक स्लाइड्स. अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट, आई सेड दैट again I said that next point is human interference. I said that human interference. Suppose मैंने क्या किया, there is this is an, I said that what, rock, Himalayan mountain region, और यहाँ पे क्या है, trees. What is there? और trees की वजह से क्या होता है? Soil erosion stop. As I have given an example several times, when the rainfall is taking place, first the 10 liter of water is falling. First it will, if the forests are there, first it will fall on the leaves, then it will go on to the what? Branches, stems, trunks, and then. आपको बोला जाए, how much time you will take to drink a glass of water? Will say, sir, 10 seconds. But if I said that drink it in 1 second, can you drink it? No. ऐसे करोगे इतने में पानी सारा बाहर, क्योंकि I have an absorption capacity. Yes or no? Infiltration capacity. Similarly, soil has also infiltration capacity. तो वो धीरे धीरे पानी हम लोग पी सकते हैं. Similarly, when the water is coming slowly and slowly, it will help in the what is the infiltration of underground water. So out of 10, 9 liter has been infiltrated and the 1 liter is moving. So that 1 liter is not disastrous. But if the trees are not there, then will falling directly, and वो किस में convert हो जाते हैं? Yes, falling directly, तो ऊपर के लेयर को हटाने लग जाते हैं. They causing what? Sheet wash. Yes or not? Sheet erosion. And they are causing, that is known as an overland flow. 10 लीटर का 10 लीटर पानी मूव कर रहा है, and there is no grass, no tree, nobody is hold. They started digging with the debris and mud, and that causing what? Debris flow and mud flow. So deforestation, one thing. Another, I said that deforestation is causing, and this is deforestation. अभी मैंने 2013 flood की बात करी, and that is also one of the deforestation, one of the cause of what? 2013. Only flood is not the natural cause. Flood is also, उस समय मैंने जो बात की वो natural cause के रूप में बात की, and now I am talking flood in the form of what? Also enhanced by whom? So the forest, now if I am talking about, ये road मैंने थोड़ा सा बड़ा structure बनाया. In the mountainous region, मैंने यहाँ से I have constructed road. In the future, that will be under the, this will increase the support हट गया. So automatically, this what rock will have now what? Feeling more shear force, and that will cause what is a different kind of what? Mass movement, especially rock slide, rock fall. आप देखोगे अभी in the Vaishno Devi में people are going, 5 or 10 people has been died. Means around 1 year ago, they have made several way, बहुत बड़े बड़े road बना दिए. They have been wide and all, but they are prone to what? This way, they have what is ना, इसकी वजह से ये पूरा ये system, all this whole system is under the pressure to move down. Yes or not? More shear force. Shear force has increased and shear strength has been, and therefore some of the parts, weather particles are falling, and कोई लोग आ गया बन गए. They are giving the what is na, fencings are giving, but the fencings are always not going to work if the rock is very heavy. They can completely what is na, block the road. So that is a kind of disaster. Yes or not? 5 लोग से ज्यादा मर जाए इसका मतलब क्या है? Disaster. I said that. So this is a road construction, a railway construction is also making the what is na, interference in the mountainous region to making it to more prone to mass movement. So write down. Deforestation in mountainous region expose the topsoil
and during heavy rainfall, along the mountainous slope, along the mountainous slope, sheet erosion over land flow causes debris flow and mud flow. And such situation has been played an important role during 2013 flash flood. During 2013 flash flood. Understood it? Next point, development of transportation network. Development of transportation network also help in increasing mass movement like earth flow, rock slide, rock fall, etc. Clear? So, समझ में आ रहा है किसकी वजह से? So, which are that we have seen? Human interference when deforestation, and other we have seen, what is I said that? Transportation network and all. So, next point लिखेंगे. There are some other factors which enhances mass movement. What is angle of repose? Angle, ये आप देख रहे हैं, this is angle of repose का मतलब होता है, it is an inclined plane. Suppose करो कि ये inclined plane और यहाँ पे कोई substance रख दिया, तो it will not slide. लेकिन वो inclined plane जिस पर वो क्या करने लग जाए, स्लाइड करने लग जाए, लिखा. लेकिन यहाँ पर पिल्ड बनाना है, पिल ऑफ उसका निकाल कर बनाना रख दूं, इसी पे बनाना कर देगा, लेकिन रॉक नहीं स्लाइड करेगा. तो इसका मतलब बनाना और इसके बीच में क्या है, सरफेस जो कांटेक्ट है वो ज्यादा अच्छा नहीं है. तो इसके लिए एंगल ऑफ रिपोज बहुत कम ही होगा. तो एवरी रॉक will have a different kind of angle approach. The angle at which anything started moving down, it is known as what? Angle of approach. So ध्यान दे, which are I am talking about? Safe. हमें कैसा वेजिटेशन खाना चाहिए? कैसा वेजिटेशन खाना चाहिए? Safe vegetation. Yes or no? S for steepness, A for angle of repose, third F for fluid effect, and fourth I said that vegetation. Which are the four other factors causes increase in landslide?
if we see that this is an Eurasian plate which is moving eastward, and here our what is an Indian Gondwana plate, and then when the Indian Gondwana plate was moving, the पहले सबसे पहले कौन सा strike किया था? This section. And when this section strike, ये चीजें मैंने पहले initial classes में भी I have discussed. So first which is, इसको this turn को बोलते हैं syntax, syntaxian bend. तो वेस्टर्न सिंटैक्शियन बेंड फर्स्ट कोलाइडेड, तो यहां पे इसका क्या होगा? दिस स्पीड हैज बीन स्टॉप्ड एंड सारा मोमेंटम किधर ट्रांसफर हो गया? ईस्टर्न सिंटैक्शियन बेंड. एंड ईस्टर्न सिंटैक्शियन बेंड कोलाइडेड लाइक आई सेड दैट जब ये जा रहा है, सो इट इज मूविंग लाइक दिस. सो द फर्स्ट वेस्टर्न सिंटैक्शियन बेंड कोलाइडेड. उसके बाद क्या हुआ? रेस्ट ऑफ द हिमालय, आई सेड दिस पोर्शन, रेस्ट ऑफ द रीजन हैज बीन व्हाट? कोलाइडेड लाइक व्हाट? स्लैंट शटिंग ऑफ द डोर. जैसे डोर को बंद करते हैं, जैसे एक हो गया और रेस्ट. इट हैज बीन क्लॉग्ड लाइक, ये कैसे फंस गया? क्लॉग्ड लाइक हिंज ऑफ द डोर. डोर का जो हिंज होता है ऐसे फंस गया. एंड द रेस्ट ऑफ द मोमेंटम सप्लाइड टुवर्ड दिस, एंड देयरफॉर द हिमालय हाईली अपलिफ्टेड ऑन विच साइड? ईस्टर्न साइड. और द कंप्लीटली बिहार के सामने जो हिमालय है, इट्स लाइक इन 90 डिग्री नियर बाय बिहार. दैट इज नॉन एज, देयरफॉर बिहार को बोलते हैं 90 डिग्री का मतलब बोला जाता है ऑर्थोक्लिनल प्लेन. सो इट्स लाइक हाईली, एंड देयरफॉर बिहार के सामने यहां पर क्या है? माउंट एवरेस्ट. जस्ट बिहार के सामने पता है ना माउंटेन, माउंट एवरेस्ट. वहीं पे मकालू, मंसालू, छोयू, डिफरेंट माउंटेन्स आर देयर हाईएस्ट. सो द ईस्टर्न हिमालय हैज मोर स्टीपर स्लोप. और जब ये टकराया, लिसन मी केयरफुली, व्हेन इट हैज क्लॉग्ड, तो ये पोर्शन थोड़ा सा छूट भी गया. इसी कारण से यहां पे वैली बन गया. इट हैज बीन व्हाट? ओपन. सो द वेस्टर्न हिमालय इज लेस स्टीपर, एंड विच हिमालय इज मोर स्टीपर? ईस्टर्न हिमालय. तो नाउ टेल मी हु इज मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड? यस. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी, let us see first one what I am using, steepness. So more the steeper, more the mass movement. I said that mass movement is directly proportional to steepness. Mass movement is directly proportional to steepness. More steepness, more mass movement. Less steepness, less mass movement. Yes or not? Thereafter I said that the eastern Himalaya is more steeper than western Himalayas. अब हम लोग किसके बीच में कंपेयर करने जा रहे हैं? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयाज. ओके. Therefore eastern Himalaya should be more prone to landslide. जनरली आप लोग लैंडस्लाइड समझते हो, लेकिन मास मूवमेंट इज करेक्ट वर्ड. लैंडस्लाइड देन वेस्टर्न हिमालय. अंडरस्टूड? And which cause is there? Which cause is there? Naturally. Natural cause is there. Yes. Acha, now tell me, people are talking too much about the northeast India, that they are like I said, यहाँ पे shifting cultivation होता है. How much area shifting cultivation is taking place? That is known as zoom cultivation. The trees, cutting the trees and shifting other, cutting the trees, और इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना के रखते हैं. How much area? Only 1150 square kilometer that has been affected. तो ये बहुत बड़ा एरिया है? नहीं. Listen me, तो ध्यान से देखेंगे. I have said that eastern Himalaya is more steeper than. लेकिन if I am talking about एक तो ये हिमालय है, there is what? Complete deforestation near to this, more deforestation there, high urbanization,
high tourism industrialization. किधर जाते हैं? सिक्किम घूमने ज्यादा जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश घूमने जाते हो क्या कोई? एंड इसके वजह से क्या हो रहा है? यस, डिक्रीज इन इकोलॉजिकल कैपेसिटी. हाई अर्बनाइजेशन, जहां पर माउंटेन में, इन द माउंटेन, सपोज इफ आई से दैट चलो हम लोग 5 लोग कार में बैठते हैं, कैन वी सीट? यस. लेट्स सीट 6 people. Yes, we can sit. Let's sit 7 people. Yes, at least 3 front, 4 back. Let's sit 8 people. अच्छा, एक बच्चा एंट्री कर सकता है. Let's see 9 people, one more at the back. Let's seat 15 people. What will happen? कार वही बैठ जाएगी. The tourism is happening more beyond the capacity of that ecosystem. So what is happening? High urbanization, high tourism industry, forest तो है ही नहीं. That led to the complete decrease the ecological capacity. Yes or not? इसके वजह से कौन? Which one is more? Which one is more prone to? Western Himalaya is more landslide prone or Eastern Himalaya? Western Himalaya. So anthropogenic factor, which I said that anthropogenic factor, yes, lead to more prone making Western Himalaya more prone to landslide than Eastern Himalaya. इसको मेंशन कर देना, बता देना. एवरी ईयर न्यूज में कहां का लैंडस्लाइड नजर आता है? फ्लड बहुत आता है आसाम में, फिर भी लैंडस्लाइड इज कंपैरेटिवली लेस. बट एवरी ईयर यू विल सी द उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश. देखो कितने लोग हैं वहां पर. एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेड दैट डिक्रीज द इन्वायरमेंटलिज्म. तो उत्तराखंड तो फिर जिंदा ही नहीं रह सकता है इफ द टूरिज्म. वो तो बोलते हैं कि आई कांट सस्टेन विदाउट द टूरिज्म. So if you compare, naturally Eastern Himalaya is more prone to landslide, but anthropogenic factor increased Western Himalaya to be more prone to landslide than Eastern Himalaya. Now we have to talk in the sense of steepness is clear, angle of repose भी आपको clear है. Different rock surface will have different angle of repose. Yes or not? Different rock surface will have different angle of repose. Generally harder rock will have more angle of repose and softer rock will have less angle of repose. Means softer rock lowest incline पे भी नीचे आने लग जाएगा, harder rock. Yes. So angle of repose is directly proportional to hardness. Angle of repose is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस. जितना हार्ड होगा तो उतना ही ज्यादा गिरने का रहेगा. अब जैसे मैं इसको रख रहा हूं, ये स्लिप हो रहा है, लेकिन इफ आई पुट दिस सरफेस तो ये थोड़ा सा रुक रहा है. यस, एबल टू सी. इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस कॉन्टैक्ट. टेक्सचर, हार्डर रॉक हमेशा देगा टेक्सचर कैसा देगा? एंगुलर टेक्सचर देगा. सॉफ्टर रॉक विल गिव व्हाट? फाइनर टेक्सचर. करेक्ट? So, is it okay? Fluid effect. Next one I said that. और ये हम लोग कल ही कर चुके थे. Yesterday we have done. Less water will cause more surface tension. Suppose I said that this rock, though there is a
दिस इज इन अ रॉक, और इसके ऊपर ये रॉक है, यहाँ पे क्या है, देयर इज इन सम सॉइल इज देयर, और इसमें पानी कम है, तो दे विल बी एबल टू मेक देन व्हाट इज इन सरफेस टेंशन इंक्रीज कर लेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा पानी फेंकते हो सॉइल पे तो सडनली दे व्हाट इज इन सरफेस टेंशन से दे बिकम लाइक दिस, सो द सरफेस टेंशन इंक्रीजेस, कल करा दिया था, एंड इफ द मोर वाटर, तो जैसे आटा में ज्यादा पानी डाल दिया देन इट विल फ्लो अवे, सो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, एंड देन सैचुरेशन डिक्रीजेस सरफेस टेंशन, और पानी ज्यादा हो गया सैचुरेटेड, देन इट विल मूव डाउन. Yesterday I have discussed the role of what? Water in the किसमें? Mass movement. So stiffness, angle of repose and fluid effect. Stiffness, angle of repose and fluid effect. It is clear. Vegetation करा चुका हूँ. Vegetation means deforestation. Forest, if there is a more forest, less, and the forest has been removed, means this is understood. So we have seen that mass movement, and if you see that अभी हम लोगों ने बताया एग्जाम्पल में, I said that Western Ghat and Himalaya. Why? So comparison between, we I said that Himalaya is more prone to what I said that Western Ghat. Why? I said that both are, first point, both are what? Steeper. दोनों steeper है. Then you have to decide where it is. Himalaya is lofty. Yes. Then it will give more gravity. ये क्या देगा? Yes, tell me. More gravity downward. समझ में आ रहा है कौन जा रहा है आगे? Another I said that therefore the Himalaya is more gravity, those who will try it, there will be more landslide. Second, third, Himalaya is softer and Western Ghat is, yes, harder. चलिए अब आगे जाता है रेनफॉल. Fourth, Himalayas receives around 200 centimeter rainfall and Western Ghat receives 200 to 300 centimeter rainfall. Though both are heavy rainfall. Understood? Therefore we can say that what? Himalaya is more prone to landslide than Western Ghat. Understood? कहीं पे भी आपको देखना हो तो study on the basis of the factors that you understood. Where the strength, shear force can increase and where the shear strength will be reducing. Is it okay? And make the map of India. Then you will get the marks. And मैं points में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा और कहानी बढ़ा के लिखना, okay? Every point. So we have finished with, I said that mass movement.